Dadhi sir, Dr. V.K. Agnihotri ji, respected Professor Kamlesh ji, pranam sir, pranam. Yes, sir. Namaskar. So we are now welcoming you all on our 496th journey of brainstorming, knowledge sharing. Namaskar, Nishanti ji, namaskar, swagatam. Due to your cooperation, guidance, mentorship, this journey is now reaching on the steps of 500. Really great. Thanks by heart to all experts who have joined and who are supporting us from 2.5 years. Thank you, thank you, thank you very much to all. Without wasting much time, tomorrow is Epilepsy Day. I am sorry that I will be in train tomorrow for Belgavi. So one day before we are celebrating today Epilepsy Day, and on epilepsy, our senior experts, respected Dr. O.P. Dadhi ji, senior Dr. R. Shivakumar, and Dr. Nishant Shukla ji will guide us today on epilepsy. So without wasting much time, I would like to request Professor Professor Vishnu Prasad Sharma ji, President, Vishwa Ayurved Parishad Assam, and ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati. Welcome, sir. Welcome. Namaskar. Good evening to everybody. Respected Professor V.K. Agnihotri ji, respected Dr. Pawan Kumar Sharma ji, respected Professor Kamlesh Sharma ji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome you, all of you, to this evening webinar on epilepsy-based remedies. Yes, today we have a very important subject. In this evening webinar, we have eminent speaker, Professor O.P. Dadhi, former HOD, NIA, Jaipur. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. R. Shivakumar, Medical Director, Chennai Heritage Hospital, Chennai. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Professor Nishant Shukla, Professor Kayasikicha, Sri V.M. Mehta Ayurved College, Anandpur. I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on important subject, epilepsy-based remedies. Yes, we have to show how our medicine shows good result in the management of epilepsy. So I welcome all of you to this evening webinar on epilepsy-based remedy. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you very much, sir. So nice of you, so kind of you. I welcome Dr. Ish Sharma from Mauritius. Welcome, Dr. Ish Sharma. Namaskar, sir. Thank you very much. नमस्कार नमस्कार जुड़ते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है चेतना लगती है यस सर डॉक्टर महेश शर्मा जी को नमस्कार खटवकर जी को नमस्कार अनुराग सिंह राजपूत जी को नमस्कार डॉक्टर शर्मा फ्रॉम बेंगलोर टुडे आई एम ऑन मूव एंड होस्टिंग फ्रॉम बेंगलोर नाउ डॉक्टर नवीन गुप्ता जी फ्रॉम यूके इज आल्सो ज्वाइन वेलकम डॉक्टर नवीन गुप्ता जी So, after welcoming all, I would like to request, I hope Dr. Kamlesh sir भी और अग्निहोत्री सर जबलपुर में है अभी अग्निहोत्री सर मैं जबलपुर हूँ कमलेश जी चले गए कल वो शायद बड़ौदा में होंगे बड़ौदा में पहुंच गए होंगे अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार बड़ौदा से अहमदाबाद के रास्ते में चल रहा हूँ अच्छा क्या बात है आप सब लोग चलायमान हो रहे मूवमेंट में
बहुत बढ़िया। स्वागत है सर, स्वागत है। आपकी ये वेबिनार जो सीरीज जो है पूरी सर्वजनीन और सर्वभूमंडलीय हो गई है। लोग चलते फिरते मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। जल थल नभ, who is that sharing? पर Please नभ में stop थोड़ा sharing. सिग्नल नहीं मिलते हैं। Please stop sharing. संख्या बहुत हो गई। जी सर। Please keep your mic mute except speaker. I would like to request humbly to all experts in audience. I would like to request initially for Kamlesh Bhattaji, as he is on the move. I don't know whether internet will be there. वाह, Sir, धन्यवाद आशीर्वचन। धन्यवाद पवन जी। पता नहीं नेट कितने क्षण रहेगा। मैं अपना निवेदन आत्मनिवेदन कर देता हूँ। बिना किसी औपचारिकता के सीधे विषय पर ही आता हूँ। मैं आज बहुत अच्छा विषय चुना है हर बार की तरह, और इस जागतिक अपस्मार दिवस के अवसर पर विद्वान लोग अपना मंतव्य रखने वाले हैं। एज यूजुअल सामान्यतया दो बातें मैं कहूंगा। एक तो चरक संहिता में जो केवल मानस रोगों के नाते दो रोगों का उल्लेख नहीं है, अपस्मार और उन्माद, ये केवल दो रोग मात्र नहीं है, ये दोनों के दोनों रोग समूह हैं। इस एक एक रोग की सीमा में अनेक रोग आते हैं मानस के, इसलिए वो हम सबको ध्यान में है ही है। दूसरा, दो सूत्र और हैं। एक, मानस रोगों का कारण क्या है और मानस रोगों का निवारण क्या है। ऐसे चरक के दो सूत्र केवल निवेदन करता हूँ। कितना सरल आचार्य चरक ने बताया है। मानस रोग होते क्यों हैं, एक सूत्र उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, इष्टस्य अलाभात और अनिष्टस्य लाभात। जिसे चाहा वो मिला नहीं, या जिसे नहीं चाहा वो मिल गया, तो मानस रोग होते हैं। कितना संक्षेप में आचार्य चरक ने निदान स्पष्ट कर दिया मानस रोगों का। इष्टस्य अलाभात, अनिष्टस्य लाभात। चाही गई वस्तु विशेष मिला नहीं, जो मिल गया उसे चाहा नहीं, ये मानस रोगों का सबसे बड़ा कारण। और इसका समाधान भी उन्होंने बहुत संक्षेप में बता दिया। क्या बताया उन्होंने? धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम। धी, धैर्य और आत्म विज्ञान, इन तीन चीजों को जान लेना, समझ लेना और व्यवहार कर लेना, ये मानसिक दोषों का श्रेष्ठ उपाय है। तो निदान का कारण और उपाय में धैर्य, धृति और आत्म विज्ञान का विश्लेषण विचार करके विज्ञान में काफी कारणों को की ब्यूटी को देखते हैं, तो संक्षिप्त से संक्षिप्त मानस रोगों का निदान ये होता है। और इसके समाधान के लिए जो भी बताया आचार्य ने कि वो धी, धैर्य और आत्म विज्ञान, ये मन के दोष का औषध है। निवेदन मैं करता हूँ। बाकी जो विद्वान मेरे मित्र और प्रोफेसर लाभ हम सबको मिलेगा। डायरेक्टर वो आज हमारे साथ हैं, अन्य सभी वक्ता हमको भाव जितनी देर जहां तक सुन पाऊंगा जरूर सुनूंगा। पवन जी का स्नेह मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं वो आदरणीय अग्निहोत्री जी से आदरणीय दधीची जी को निमंत्रित करने की वो अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जीवट को बहुत बहुत प्रणाम है, नमन है कि अस्थायी होते हुए आप स्थायी कार्य को और अधिक स्थायी करते चले जा रहे हैं। केवल एक चौके की जरूरत है, और उस चौका के लिए आज 3 हमारे मुख्य अतिथि वक्ता तो उपस्थित ही हैं। सुबह की चर्चा में मुझे प्राप्त हुआ कि डॉक्टर वैद्य नवीन कुमार गुप्ता जी
जो इस समय लंदन में है, उन्होंने बताया कि प्रोफेसर ओम प्रकाश दधीची जी कभी उनके बैचमेट रूममेट पीजी एक कोर्स में वहाँ शायद कहाँ बताया, जामनगर है कहाँ रहे हैं, तो वो भी अच्छे से उनको स्मरण कर रहे थे। और मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश दधीची जी को बहुत ही सम्मान और आदर के साथ में आज इन आशाओं के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मानव मात्र में अपस्मार और उन्माद एक ऐसी व्याधियां हैं जो अचानक में रहती हैं, माने इन पर लाइफ रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है कि सामान्य को कब दौरे पड़ जाए, कब क्या हो जाए, बुखार खांसी जुकाम या दूसरी चीजें तो स्थापित है, अटेंडेंट भी उनके लिए केयरफुल होते हैं। मुझे अच्छे से परिवार में याद आ रहा है, कुछ लड़की थी तो वो जल जाती थी खाना बनाते बनाते, अचानक से जब उसको आ जाता था, बाउट आ जाता था। तो प्रोफेसर दधीच साहब को इस माने पूरे सम्मान के साथ में, इस आशा के साथ में हम इनवाइट कर रहे हैं कि आपके ज्ञान से हम सब लोग लाभान्वित होंगे और कल स्थापित जो हमारा वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है उस पर आपके आज का जो प्रवचन होगा वो बहुत ज्यादा दूर तक लाभदायी रहेगा। रही बात आयुष जो बेस्ट रेमेडीज की बात कही है, उसके लिए प्रोफेसर वैद्य कमलेश जी ने बता ही दिया कि चरक तो सब कुछ बताते ही है कि हमें कैसे धीरति, स्मृति और विज्ञान को पूरा ध्यान रखना है। बाकी की चर्चा आपसे सुनेंगे। तो प्रोफेसर ओम प्रकाश दधीची जी का दोनों हाथों में जोड़ के उनका स्वागत है, निवेदन है, आप आइए और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित कराइए। प्रोफेसर दधीची, नमस्कार। धन्यवाद विनीत कुमार अग्निहोत्री जी। जी सर। मुझे बहुत ज्यादा चढ़ा दिया आपने, ऐसा नहीं, कुछ सत्य नहीं है। सत्य को क्या चढ़ाना, सत्य तो सत्य ही है। हाँ, सत्य नहीं चढ़ता लेकिन झूठ चढ़ जाता है। तो आज हम का मिथ्यावलंबी नहीं है, मिथ्यावलंबी नहीं है। सत्य पे ही रहेंगे। आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी अभी हो रहे थे कुछ, आपने शायद वीडियो ऑफ कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ। हाँ, जय हो जय हो जय हो, नमस्कार। हाँ, जय हो नमस्कार। तो आज का जो ये 496वां वेबिनार है, उसके लिए पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा, एक चौका ही पीछे है। तो इस वेबिनार में शामिल होने वाले मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं पवन कुमार का, और इसके जो अध्यक्ष हैं विष्णु प्रसाद जी, उनका भी अभिनंदन। इस साथ में मेरे जो वक्ता रहेंगे आर शिव कुमार और निशांत जी, उनका भी अभिनंदन। निश्चित रूप से आपने सही सुना, डॉक्टर पवन गुप्ता जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं और अभी यूएसए में रहते हैं, वो मेरे क्लासमेट भी रहे हैं। मेरे नवीन गुप्ता जी, नवीन गुप्ता जी। हाँ, नवीन गुप्ता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 36 साल हो गए जी, कोई बात नहीं। नहीं, 36 के हो के 8 बन जाइए, 9 36 मत बनिए, 8 बन जाइए, 63 बन जाइए। 8 बन गए, 8। दादी जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाल सफेद हो गए आपके? बाल सफेद हो गए? अच्छा, तो आपके सलामत है। मैं तो काले हैं जी, देखो पक्के काले हैं। हाँ, पूरा डाई कर रखा अच्छा सा। नहीं 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 नहीं, जिंदगी में एक केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, जूते में भी नहीं करा। छोड़ दो इसको, तो बाल को तो छोड़ दो। चलो चलो चलो, बढ़िया, बधाई हो आपको। हाँ जी, हो ही गए भाई। हाँ जी। तो ये सभी का मैं नमन करता हूँ, और जो इस वेबिनार से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हुआ इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। जो अपस्मार आज सब्जेक्ट रखा गया है और कल इसका दिवस है, वो बहुत ही समसामयिक है, और जो इससे पीड़ित होते हैं बेचारे, वो बहुत ही दुखी रहते हैं, तो उनको देखना पड़ता है। हमारे यहाँ सबकी चिकित्सा कही गई है, लेकिन अष्टांग हृदय में यदि हम देखें तो इसका प्रतिषेधात्मक चिकित्सा ही है, और प्रतिषेधात्मक इसको अपस्मार को लिया है। बाकी सब हम देखें, ज्वर चिकित्सा, अतिसार चिकित्सा, ग्रहणी चिकित्सा, राज्यक्षमा चिकित्सा। प्रतिषेधात्मक का मतलब भी यही है कि जो एक बार इससे पीड़ित होता है उसको प्रिवेंटेटिव रूप से बचाया ज्यादा जा सकता है उसको चिकित्सा के बजाय, और कई बार ये लॉन्ग लाइफ रहता है। तो हमारे यहाँ इसकी जो सबसे पहले हम देखें कि क्या कहा गया है, अपगता स्मृति यस्मिन् रोगे स अपस्मारः। अपस्मार रोग क्या है? जिसके अंदर स्मृति का लोप हो जाए, स्मृति चली जाए,
ऐसा नहीं कि स्मृति चली गई दीर्घकालिक या लघुकालिक, लेकिन जब भी इस रोग से कोई आक्रांत होता है तो उस वक्त स्मृति चली जाती है। मतलब जैसे ही वो गिर गया, मुंह में झाग आ गए, अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद में जब उठेगा तो ये कहेगा कि ये क्या हुआ है। उस वक्त उसकी स्मृति रहती है, नहीं रहती, तो उसको वो अनुभव नहीं होता उस वक्त। तो वो स्मृति जो अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति, अनुभव के आधार पर जो रहता है, उसको वो उस रोग के आक्रांत होने पर, उसका दौरा पड़ने पर, सीजर आने पर उसको ध्यान नहीं रहता और वो अनुभव उसको नहीं होने से इसको जो स्मृति है वो अपगत हो जाती है, चली जाती है। इसलिए इस रोग को अपस्मार कहा गया। इसी तरह जो चरक है वो भी यही कहते हैं, स्मृतिर अपगमम प्राहुर अपस्मारम विषग्विद। जो विषग्विद है या जो वेद्य है वो इस अपस्मार के में स्मृति के चले जाने के कारण इसको अपस्मार कहा गया है। और इसमें तमः प्रवेशम विभिन्न चेष्टम धीशत्व स्वल्पवात, इसके अंदर तम प्रवेश, आंखों के आगे अंधेरा आना, विविध चेष्टाएं होना, धी और सत्व का चला जाना, ये सारा का सारा ये है इसी के कारण होता है। तो इसमें विज्ञान रूप से जो व्याधि है वो, जैसे कमलेश जी ने अभी आपको बताया था कि दो ही चीजें हैं, जो चाहत नहीं है उससे ज्यादा मिल जाना, और जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलना, और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होना, और फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत सारी चीजें होना। हालांकि ये एक कारण है हमारे यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और दूसरे कारण भी है। तो जितने भी बीते हुए ज्ञान कार्य का ज्ञान नहीं होना, बुद्धि और सत्व स्मृति का शून्य हो जाना, बुद्धि और सत्व जो है ना मन, ये दोनों का कार्य नहीं करने पर जो स्मृति है वो शून्य होती है, तो उसके कारण होता। अब ये मुख्य जो हमारे यहाँ कारण बताए गए हैं उसमें अहितकर आहार विहार। अब ये अहितकर और हितकर, इन दोनों में सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति या दूसरी त्रिदोष प्रकृतियां, उनके लिए कुछ लोगों के लिए जो हितकर होती है वही दूसरों के लिए अहितकर भी होती है। तो अहितकर भोजन जो है वो इसका कारण मुख्य रूप से है। और अपवित्र और असुचि, अपवित्रता भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये तामसिक रोग है, और इस तामसिक के रोग के कारण अपवित्रता, और अपवित्रता में बहुत सारी चीजें आ गई जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। और उन सब इन दोनों तीनों कारणों के कारण जो दोष है, वात पित्त और कफ या सत्व रज तम, सत्व का तो इसमें कमी हो जाती है, शून्यता कम होती है, और रज और तम बढ़ जाता है। तो वो दोष जो है उन्मार्गामी हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उन दोनों के जब दोष उन्मार्गामी होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, सत्व और तम, तो सत्व गुण की दुर्बल हो जाता है, और उसके कारण हृदय जो इसका सत्व या मन जो है उसका स्थान है, तो हृदय वातादि दोष से आवृत हो जाने के कारण ये दुष्ट होता है। अरे अल्प सत्व से बल प्रदुष्टा, जो जो अल्प सत्व लोग हैं उन लोगों को ज्यादा करता है, और ये मल जितने भी है जो विकृत दोष है या विकृत मल है, उनके कारण ये हृदय दुष्ट होकर उसको आवरण कर लेते हैं। और साथ ही जो वायु है वो चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग के कारण मन विशेष के रूप में दूषित हो जाता है और अपस्मार का कारण बनता है। ये मुख्य कारण यहाँ बताए गए हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो और बहुत सारे दूसरे कारण भी हमको होंगे, और यथास्थिति जो आज की स्थिति है उसके व्यवहार के कारण में हमको ये सब जानना पड़ेगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक तंत्रिका सिग्नल है, जिनमें रसायन बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, उनका जब इनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तब भी ये अपस्मार या एपिलेप्सी रोग होता है। दूसरा, मस्तिष्क के अंदर कहीं भी ट्यूमर हो जाए या सिस्ट हो जाए, तो या इस तरह की कोई दूसरी विकृति आ जाए जिससे दूसरों पे कंप्रेशन आ जाए, तो ये उसके कारण भी एपिलेप्सी हो सकता है। इसी तरह तीसरा, स्ट्रोक, यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है
या और किसी कारण से स्ट्रोक्स आ रहे हैं और उस स्ट्रोक के अंदर मस्तिष्क में विकृति है तो भी एपिलेप्सी रोग हो सकती है। इसी तरह कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मस्तिष्क पे चोट लग गई और उस चोट में लगने का कोई थ्रोम्बोसिस हो गया या और कुछ हो गया तो उस जो भी मस्तिष्क के अंदर कहीं क्षति होगी या डिजेनरेशन होगा उसके कारण भी ये अपस्मार रोग हो सकता है। और कई मिश्रित भी है, स्ट्रोक हो गया, कोई बीमारी लंबे समय तक चल रही है, चोट भी लग गई और खान पान भी इस तरह का रहा और उसको न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल रहा है और साथ के अंदर चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग आदि मनस्थिति भी खराब है तो इन सब के कारण भी ये सब मिलकर एपिलेप्सी का एक कारण बनता है। लेकिन यदि आयुर्वेद की हम दृष्टि से देखें तो संप्राप्ति में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे के सारे दोष जैसे मैंने बताया था अभी कि सत्व कम हो जाता है और रज और तम बढ़ जाता है, साथ में जो वात, पित्त और कफ है वो प्रवृत्त हो जाते हैं और दोषों की गति बहुत ज्यादा बढ़कर उस जो हृदय है उसको संपीड़ित करती है और उसके कारण उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। व्यथिते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा पश्यन्ति सन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरित्यपि जिह्वाक्षि भ्रू प्रवल्लालो हस्तो पादो च विक्षपत दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते। उसमें जो धमनियां है ये सारे दोष बढ़कर धमनियों के द्वारा अर्थात धमनियां वेन्स और आर्टरीज के द्वारा ये वहां पहुंचती है और हृदय भी हमारे यहाँ दो तरह के मस्तिष्क स्थित हृदय है और एक वक्षस्थ स्थित हृदय है, दोनों को ही पीड़ित करती है और उससे पीड़ित होने से वो व्यक्ति उनके पीड़ित होने से व्यथित हो जाता है, मूड हो जाता है, उसमें भ्रांति हो जाती है, उसका मन भ्रांत हो जाता है, बुद्धि भ्रांत हो जाती है और उन सब के कारण उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो जिह्वा, अक्षि, भ्रू इनके अंदर और मुंह से लाला स्राव, हाथ और पैरों के अंदर विक्षेपण या पिंडिकोद्वेष्टन इस तरह मोड़ने के जैसे मरोड़ने जैसे कुछ होता है तो ये होता है और वो एकदम गिर जाता है, लेकिन जब उठता है तब ऐसे लगता है कि सुप्तवत प्रतिबुध्यते है, ऐसा लग रहा है। अब इसमें जो हम देखें वो दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र रूप में अपस्मार होता है और एक साधारण रूप में होता है। यदि जो उग्र है वो ग्रांड-माल और साधारण पेटिट माल। तो उग्र जो ग्रांड-माल है उसकी 6 अवस्थाएं होती है। यदि हम सबसे पहले देखें तो पूर्वावस्था होती है, उसके अंदर आक्षेप प्रारंभ होने के 1 दिन 2 दिन पूर्व से ही या कुछ घंटों पहले या कुछ मिनट पहले हम उसको लगता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो इलनेस फील करता है, अस्वस्थता फील करता है, शरीर में उसको आलस्य रहता है, तिरसूल होता है, भ्रम हो जाता है और स्वभाव और उसका चरित्र जो है उसमें बार बार बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये पूर्वावस्था उसको बताने के लिए है कि इस तरह का उसको किसी एपिलेप्सी या सीजर जो है उसके वेग आने वाले हैं, तो ये हम देख सकते हैं उसके अंदर। दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व ग्राहावस्था, ओरा उसमें साफ में दिखता है, तो जो साफ जो हमारे हाथ पैर हैं उनकी पेशियों में कंपन होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, त्वचा में एक प्रकार की जो है विशेष लहर का अनुभव होता है, बार बार उसके अंदर वो कुछ आता है। इसी तरह हाथों में और पैरों में झंझनाहट होती है, कर्णनाद होता है, संज्ञा का नाश, नेत्रों के सामने कूलिंग कुछ उड़ता हुआ सा दिखता है, दिखाई देता है। तो इस तरह के जब यदि हमको दिखाई दे तो उसको हम माने कि ये पूर्व ग्रहावस्था या ओरा अवस्था है, सेकंड जो उग्र धारण की अवस्था है। तीसरी जो है वो चित्कार होती है, इसके अंदर चिल्लाकर मूर्छित हो जाना या धराशायी हो जाना, ये सारे चीजें आने के ऊपर। और तीसरी टॉनिक स्टेज होती है या निरंतरता अवस्था, जिसमें शरीर जकड़ जाता है, दांत भिज जाते हैं, मुट्ठी बन जाती है, मुंह में से लार या झाग निकलने लगते हैं, श्वास रुकने लगता है,
ग्रीवा की शिराओं में रक्ताधिक्य हो जाता है, मुखमंडल श्याम हो जाता है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। ये जो अवस्था है ये करीब आधा से 1 मिनट तक तेजी से रहती है, और उस वक्त उसका मुंह खोल दिया जाए या थोड़ा सा संभाल लिया जाए तो वो संभल जाता है वापस। इसी तरह फिर कॉलोनिक स्टेज एक रहती है जिसमें सांत्रिता अवस्था हम कह सकते हैं। जब ये वापस कम हो जाता है तो उसमें रुक रुक कर आक्षेप, जो कन्वल्सन्स है वो आते हैं, थोड़ा रुक रुक के फिर आ जाएंगे, फिर रुकेगा, और जो शाखाएं हैं हमारे हाथ पैर और ये उसके अंकुचित और प्रसारित होने लगती है उनकी मांसपेशियां। नेत्र और मुख बार बार खुलते हैं और बंद होते हैं, आंखों की पुतलियां भी बार बार खुलती है, बंद होती है। इसी तरह लाइट का रिफ्लेक्स भी उसके अंदर फिर ठीक होने लगता है, जबकि पहले वाली अवस्था में नहीं होता। नेत्र कला प्रतिपक्ष नष्ट हो जाता है, गले में गड़गड़ाहट होती है। इसमें यूरिन और स्टूल ये भी निकल जाते हैं, जीभ बाहर निकल जाती है, मुंह में झाग आ जाते हैं, लाला स्राव होता है, मुखमंडल की जो है अलग से ही अवस्था हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस अवस्था के अंदर ये लास्ट अवस्था कॉलोनिक होती है। जो छठी अवस्था है वो तंद्रावस्था या ड्रॉजीनेस होती है। इसमें धीरे धीरे ध्यान होने लगता है, शरीर के अंदर फरकराहट कम होने लगती है, मुंह से जो झाग आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। सोने के बाद जैसे मनुष्य पुनः उठ बैठता है वैसे ही रोगी भी उठ बैठता है। तो ये जो उग्र अवस्था है उसकी ये 6 स्टेजेज है, और उनसे निकलने के बाद ये पूरा का पूरा हमको पता लगता है कि ये एपिलेप्सी है और उसके ये लक्षण है, और उसके कॉज के कारण हम निश्चित कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं कि यही है, और उस वक्त हमको चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एक साधारण रूप से भी बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी या सीजर होता है, लेकिन उसमें इतने लक्षण नहीं होते। वो थोड़े से होते हैं कि रोगी अल्प समय के लिए, थोड़ी सी देर, शॉर्ट टाइम के लिए एकदम करते करते चेतना शून्य हो जाता है या भूल जाता है, या उसको लगेगा कि गिरेगा, या सीजर ऐसे आए लेकिन वो संभल गया, तो वो एक साधारण रूप से एपिलेप्सी है, लेकिन गिरता नहीं है। हम उस वक्त यदि उससे कोई प्रश्न करते हैं या बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या किसी भी तरह से उसका ध्यान नहीं रहता, प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, उसके उस वक्त नेत्र स्थिर हो जाती हैं, पुतलियां प्रसारित हो जाती हैं, पुनः शीघ्र बातें थोड़ी देर बाद ही फिर वापस संभल जाता है और वो फिर बातें करने लगता है। ये अवस्था आधा से 1 मिनट तक रहती है। इसमें कभी कभी एक तरफ सिर लटक जाता है लेकिन साथ का साथ गिरता नहीं, और लेकिन हाथ में कोई चीज हो तो वो गिर सकती है, और यूरिन भी उसका जो है निकल जाता है। तो इस तरह की ये 2 अवस्थाएं हुई एपिलेप्सी की, अपस्मार की, एक उग्र अवस्था और एक सामान्य अवस्था। लेकिन उग्र अवस्था ज्यादा दिक्कत वाली होती है। सामान्य अवस्था में भी यदि हम प्रतिषेधात्मक चिकित्सा या प्रिवेंटेटिव जो भी हम चीजें कर सकते हैं वो यदि हम करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो अपस्मार है उसके 4 भेद किए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अपस्मार जो अलग अलग हम वात, पित्त और कफ के या यदि हम देखें तो वात का, पित्त का और कफ का उनमें असर दिखता है। जैसे वातज अपस्मार है तो उसमें रोगी का शरीर कांपता है, दांतों में कटकटाहट होती है, मुंह से फेन निकलता है, झाग निकलते हैं, श्वास की गति तीव्र हो जाती है, पुरुष लाल या काले रूपों को देखते हुए मूर्छित होता है। वहीं पित्त में जो है मुख में से पीला, येलो रंग का जो है झाग निकलते हैं, रोगी का शरीर, मुख, नेत्र पीले हो जाते हैं, वेग से पूर्व पीला तथा लाल रूपों को देखता है, उसको प्यास अधिक लगती है, शरीर गर्म रहता है, सभी जगह जैसे आग लगी हुई है और चारों तरफ कुछ उठ रहा है, जलन जैसे हो रही है, उसको महसूस होता है। इसी तरह यदि कफज अपस्मार में हम देखें तो श्वेत वर्ण का फेन निकलता है, शरीर, मुख, नेत्र का वर्ण श्वेत हो जाता है, शरीर शीतल भारी हो जाता है, रोमांच होता है,
श्वेत वर्ण के रूपों को देखते हुए मूर्छित हो जाता है, क्योंकि वो देर से चेतना आती है। तो इस तरह हम देखें, और जो सन्निपात है उसमें सभी प्रकार के लक्षण मिले हुए होते हैं। लेकिन यदि इसका वेग काल जो होता है तो बात के अंदर 15-15 दिन के अंदर आ सकता है, पित्त के अंदर और जल्दी आता है 10-10 दिन में। और यदि कफ के वेग कालों को हम देखें तो महीने में 1-2 बार वो आता है। तो इस प्रकार यदि हमने देखा कि इसके ये लक्षण ये होते हैं और इस तरह के स्थितियां होती हैं। इसी तरह इसमें एक योशा अपस्मार और होता है, जो युवा लड़कियां हैं उनको होता है। जैसा कमलेश जी ने भी बताया था कि वो चरक में ये बताया गया है कि जो आकांक्षित चीजें होती हैं वो नहीं मिलने पे ऐसा होता है। तो जो युवतियां हैं उनकी आकांक्षाएं बहुत सारी होती है, और वो आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो अपस्मार, उनका जो है मनस्थिति बिगड़ती है, और उसके बाद में ये सारा चीजें आते हैं। तो ये जो ऋग स्रोत है, मन है, जो सत्व है, आत्मा है, इन सब के ऊपर एक आवरण पैदा होना या उसको अलग से होना, उसके कारण ये सब चीजें होती है। और उसको यदि हम संप्रबोधन कर दें, उनको हटा दें, और वो या उसकी अच्छी काउंसलिंग कर ले तो कुछ चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन यदि नहीं हो तो जो जैसे मैंने बताया ट्यूमर के कारण या न्यूरोट्रांसमीटर जो चीजें हैं हमारी, उनके अंदर का असंतुलन आने के कारण या किसी बीमारी के कारण, स्ट्रोक के कारण या और किसी दूसरे कारण जो चीजें होती है, तो उनको हमें ठीक करनी पड़ती है। और उसके लिए बहुत सारी औषधियां भी है, तो वो जिस तरह का निदान है उसी के अनुसार हम करें। लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम कभी भी चिकित्सा करते हैं सभी रोगों में, कि यदि वातज है, पित्तज है और कफज है, तो उनमें पंचकर्म का संशोधन कर्म भी हमें करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अभ्यंग और स्वेदन होने के बाद जो वातज यदि अपस्मार है तो उसमें बस्तियों का उपयोग हम करें, पित्तज के अंदर विरेचन का उपयोग करें और कफज में वमन का करें। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें होती है या संभावित दौरा पड़ते हैं अपस्मार के, या इसमें सीजर एकदम होता है, तो उस वक्त हमको उसको प्रबोधन में लाने के लिए, संप्रबोधन करने के लिए वापस किसी अपनी पुनः अवस्था के अंदर लाने के लिए 2 ही चीजें हमारे पास होती है, और वो सबसे बड़ी चीज है नश्य। जो तीक्ष्ण नश्य है वो हम दिए, चाहे वो हमें जो भी उपलब्ध हो जाए। तंबाकू ही यदि मिलती है तो तंबाकू उसको सुंघा दे, या पोटेशियम परमैंगनेट सुंघा दे, पिप्पली सुंघा दे, या दालचीनी सुंघा दे। इस तरह की कोई भी तेज चीजें जो है, या जो तंबाकू जो होती है टोबैको, वो ही हम सूंघने वाली होती है, उसको सुंघा दे या प्रधमन नस से करें, तो वापस संप्रबोधन हो जाता है। यानी जो गिर गया है या जिसको संज्ञा खो चुका है, उसको वापस संज्ञा आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे आचार्यों ने जितने भी है, वो बुद्धि पर काम करने वाले और मन पर काम करने वाले जो चीजें हैं, और जो सत्व और रज जो हमारे मानसिक दोष है, उनको ठीक करके और सत्व की वृद्धि करने वाले इस तरह के बहुत सारी चीजें हमको बताई गई है। तो उसमें सबसे पहले तो हमारा है पंचगव्य घृत, गोबर का रस, गाय का दही, गाय का दूध और मूत्र और घृत, इनको समान मात्रा में लेकर विधि पूर्वक पकाकर 3 से 4 ग्राम की मात्रा में यदि हम सेवन कराएं, तो कुछ समय के अंदर सभी तीनों प्रकार के जो हमारे चारों प्रकार के अपस्मार हैं उनमें लाभ मिलता है। इसी तरह महापंचगव्य घृत है, ब्राह्मी घृत है, सिंधव हिंगवादी घृत है। इसमें वच जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सीधा वचा को घिसकर भी देने से या वचा को चटाने से, और इसका घृत बनाकर उससे भी, अमल का भी घृत है। इसी तरह जीवनीय यमक, तो जो है घृत और तेल मिला के और उससे कुछ बनाया जाता है, वो भी दिया जाता है। और अमल का भी घृत, मतलब अधिकतर जो अपस्मार रोग के अंदर औषधियों बताई गई है या चिकित्सा बताई गई है, उनमें घृत मुख्य रूप से है। और घृत जो है
वो मस्तिष्क के अंदर या बुद्धि का विकास करता है और वात का शमन करता है, इसलिए इसको सब जगह लिया है। इसी तरह अमलकादि घनत है, कुछ तेलों का भी प्रयोग है, जैसे कटभ्यादि तेल है, पलंकशादि तेल है, कुछ धूपन भी हम करते हैं, उससे भी ये होता है, उत्सादन है, नस्य है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काम में लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो नस्य देने के बाद जब प्रबोधन हो जाए और प्रबोधन होने के बाद में ही हम ये सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इसपे जो प्रत्यात्मनीयता रूप जो औषधियों का उपयोग होता है वो भारंगी है और कड़वा बच है, नागदोम, श्वेत अपराजिता, श्वेत वच, विषाणिका, मालकांगनी जो ज्योतिषमती है वो, और बकरे का मूत्र और कायस्थादिवर्ती, मुत्यादिवर्ती, ये सारी की सारी चीजें हमें, कासादि दुग्ध, पुष्पांड घृत, ये सारे मेद्य द्रव्य जो है इनका उपयोग नस्य के रूप में किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे एक रोग नहीं रहता, कई व्याधि सांकर्य हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस भी होते हैं। एपिलेप्सी के साथ साथ और दूसरी व्याधियां जो मानसिक विकार हैं वो भी आ जाते हैं और शारीरिक विकार भी आ जाते हैं, तो उसके अनुसार भी हमको बहुत सारे करना चाहिए। जो प्रयोग के अंदर बहुत सारे आए हैं, तो यहाँ राजस्थान में एक सिद्ध भेषज मणिमाला जो रामकृष्ण जी की चलती है और यहीं की लिखी हुई है, उसमें एक सबसे पहले योग दिया हुआ है वज्रपोली योग, और वो राजस्थान में आसानी से हो भी जाता है और उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी मिले। बाजरा हमारे यहाँ बहुत होता है, उस बाजरे को पिसवाकर जो आटा होता है, उस आटे के अंदर गोदंती भस्म 1 मासा, 50 ग्राम में 1 मासा अर्थात 1 ग्राम डालकर उसकी रोटी बनाई जाती है। रोटी को अच्छी तरह सेक कर उसको अच्छी तरह घृत से प्लूत कर देते हैं और रात को रख जाते हैं, तो वो वज्रपोली पर्युषित योग है, उसको सारी रात रखे रहने दो। दूसरे दिन भैंस के दही में उसको चूर कर थोड़ा बूरा मिलाकर और खाने से 1-1.5 महीने में, जो यदि ट्यूमर, स्ट्रोक या चोट लगने से या किसी तरह के मस्तिष्क के अंदर विकृति दूसरी दी है, ये जो स्ट्रक्चरल हो, तो बाकी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर जो असंतुलन होता है रसायनों का, उस बीमारी में यह योग बहुत अच्छा काम देता है। इस प्रकार बहुत सारे और भी हैं, तो मैं अपना ये, क्योंकि 1 घंटे का समय है और 9:41 करीब हो चुके हैं, तो मेरे बाद और भी वक्ता है, तो मैं अवसर उन लोगों को भी मिलना चाहिए। मैंने बहुत संक्षिप्त में और अपना जो अनुभव था और जो आयुर्वेदीय पक्ष विशेष रूप से था उसको रखा है। आज के इस अवसर पर जो मुझे पवन जी ने अवसर प्रदान किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। अग्निहोत्री जी, विष्णु प्रसाद जी और मेरे मित्र नवीन गुप्ता जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस अवसर पे रहे और मुझे जो अवसर मिला उनके साथ कुछ ठीक जो है आपस में हमारा ज्ञान बांटने का एक अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब ये गुरु मंत्र हमको कहाँ मिलते सर, बोलिए ना, ये जीवन के अनुभव है, बहुमूल्य अनुभव है जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जुड़ते रहिए सर, मैं आप लोगों के लिए समय 9 बजे करने को तैयार हूँ सर। लेकिन जुड़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। नहीं, निवेदन सर, आपको आज्ञा देने वाली मेरी कहाँ साहस। अग्निहोत्री सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीक्षित जी, आपने कहा, हमने सूक्ष्म बताया, आपका सूक्ष्म इतना विस्तृत है कि कोई पक्ष ही नहीं छूटा। विशेष रूप से आपने अपना अनुभव सिद्ध जो उपचार पक्ष बताया है कि सबसे बड़ी चीज है संप्रबोधन
करने के बाद या करने के लिए जो स्टेप्स हैं बहुत कीमती हैं, जिसमें आपने नस्य के उपयोग की बारंबार व्याख्या की और उसकी उपयोगिता बताई। साथ में आपने जो बाजरे के आटे की रोटी का और उसमें जो गोदंती भस्म मिला के बना के रखना और उसको परिष्कृत करके, वो व्यवस्था इतनी अच्छी है कि शायद ये घरों में सामान्य रूप से चल सके और मरीज को भी यही नहीं लगेगा कि औषधि है, वो इस रूप कोई में औषध ले रहा है। हाँ, कि वो उसको एक होता है ना, उसको साइकोलॉजिकली भी ठीक करना पड़ता है कि हमको क्या खिला दिया, क्या कर दिया, तो जल्दी स्थापित होती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बड़ा आभार। और आपकी ये अमूल्य धरोहर हम लोगों को आज प्राप्त हुई है एक अनुभव के रूप में, आपका हृदय से प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। कौन सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब डॉक्टर आर शिव कुमार को आमंत्रित, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आर शिव कुमार, मेडिकल डायरेक्टर चेन्नई हेरिटेज हॉस्पिटल, डायरेक्टर चेन्नई हेरिटेज फार्मा, फॉर्मर HOD श्री सियाराम, sorry, Siaram is ours, Sri Sai Ram Ayurved Medical College and Research Center, Chennai. Welcome, welcome Dr. R. Shivakumar for first time, but it should not be first and last time because this platform is yours and we would like to invite and welcome you daily. Thank you. Definitely, Thank sir. you very much. Namaskar, everybody. The great honor to be here in front of all the well-versed, experienced doctors in the field of Ayurveda. So I'm very, it's like back 15 years, I had presented my final year Viva in front of professors. So it's like that, speaking once again in front of all the very most seniors. So it's nice to speak in front of you all again. So I think our dear Professor Om Prakash Dadich sir had covered most of the points. So I would like to highlight certain points in the treatment principles. That would be better because we follow these principles and we are able to get much more better results. So that's what I'm trying to share here. Sir, can you please allow me to share my slides? Definitely, definitely, you can. Okay, sir. Thank you. So hope it's visible now. Okay. Clear, clear, very loud and clear. Fine. So I'm going to skip most of the slides because all those slides were detailedly discussed by our eminent professors already. So let me just get into the slides directly. So all these points were discussed. So let me not get into all these points once again. So these are the basic basic subclassifications of seizures in modern medicine. So it's just for an information. So let us not get into deep. And signs and symptoms are there. And then aura, which is the Pururupam, what we call as Pururupam, is also explained in modern medicines. And we have investigations. And then we come to Ayurvedic part. Again, the introduction part has been discussed in detail. The Samprapti had been discussed in detail. And the common lakshanas are there. And we have seen this already been explained by our OP Dadich sir. So, and this, the lakshanas of Vadajam, Pittajam, and Kavajam, and Sannipadajam, Apasmaram have also been detailedly explained already. Now, coming to the diagnosis, there are certain things that has to be kept in mind because most often, in many cases, apasmara, many diseases can mimic apasmara because many other diseases can also bring seizure-like presentations. So that is why history is very important, and conditions that can mimic apasmaram or udmadam, madam, murcha, sannyasam, atatva binevesham, madatyayam, pralapam, tantra, brahmam, klamam, sannipada jwaram, and yosha apasmaram. So many places we need to be very careful, and we need to, even in modern medicine, they say that there are certain pseudo seizures, what they call as NEEDs, which can happen, which can be very similar to tonic-clonic seizure, but it may not be a classical case of epilepsy. So that is what even the modern medicine says. So this is how we can differentiate between a
proper epileptic attack and the pseudo seizures. So that is what I've tried to put as a tabular column here with various factors through which we can decide whether it is a before going to an proper EEG and other medical tests. Before going into it with Pururupam Lakshanam, we can just see what it is actually, if it is apasmaram or it is a pseudo seizure. So here, all these things are can give us an idea to diagnose in a clinical setup before going into EEG and such other confirmatory tests. And general treatment principles as per modern medicines is treatment of underlying conditions, avoidance of precipitating factors, suppression of recurrent seizures with medicine or surgery, addressing a variety of psychological and social issues that can precipitate seizures. So this is from the modern medicine, but from Ayurvedic point of view, what I feel is, since we are able to differentiate apasmaram based on Vadajam, Pittajam, Kafajam and Sannipadajam, even I feel the treatment should also be in the same way, not only in Shodhana, but also in Shamana. In Shodhana, we know Bastir, Vireko, Vamanam, but in Shamana, when we come to Shamana, we always prescribe a set of medicines to all the cases of apasmaram. But when we are able to see seizures and classify them into Vadajam, Pittajam and Kafajam, then the treatment should also be in the same way, so that we will be able to address the primary cause and treat the patient in a better way. So that is what I'm trying to conclude here. So in Vadaj apasmaram, these are the drug of choice that I use in my clinical practice, and we have seen the symptoms earlier, Vadajam apasmaram symptoms earlier. So here we can go for Dhanada Nayana the Kashayam, which is from Sahasra Yogam, and Bhadra Darva the Gana Kashayam from Ashtanga Hridayam, Kalyanaka Kashayam. If you go to Kalyanaka Kashayam of Ashtanga Hridayam, you can see Falasruddhi of almost whatever spoken in Ayurveda. You can see Balam, Meda, Ayu, then Mangalya Haram, Kalyanaka Karam. Then you have Ashta prakaras of Ayurveda, that is Kaya, Bala, Graha, Urdvanga, Shalya, Damsha, Jara, Vrishan. So all these divisions. So you can see the Falasruti saying that Kalyanaka Kashayam can be given in almost all conditions. My Guru, Dr. L. Mahadevan, always says, if you know a disease very well, you can prescribe Kalyanakam, and if you still don't know any disease, still you can prescribe Kalyanakam, because it has Falasruti of almost all the diseases covered there. So here in Vadaja apasmaram, the Kashayams can be Dhanadhanayana, Bhadradarvadi, Kalyanakam, and with the combination of churnas like Jadamamsi, Yeshtimadu, Ashwagandha, with Kalyanaka Gridam, Chetasa Gridam from Chakradatta, Swarna Mukta Tivadi, Gorochana Guliga, Kasturadi Guliga. And in Siddha, we have certain very beautiful medications which are often not known to the other part of India. So that is why I'm a practitioner who come from a family which is practicing Siddha. My father is a practitioner, and he worked for central government under Central Research Institute for Siddha for past 25 years, and my grandparents are all from Siddha practicing family. So I wanted to highlight some of the Siddha medicines here. So we use Peranda Barpam from Siddha, and we use Linga Chenduram and Rasa Senduram from Siddha. They are very effective in case if we are dealing with apasmaram, which is of Vadaja type. And then we have all the external applications where Antatailam is very effective if it is given with Dashamula Kashayam in case of Vadajam. And then we have, of course, Kshirabala and Kalyanakam. Pratimashan, Nasyam can be given with Kshirabala and Kalyanakam. So that is very important. Nasyam, as we already saw, our professors were discussing on the Nasyam. So here I would always go with Kshirabala and Kalyanaka Gritam as Nasyam. So that is often not discussed because we always see Thylams being given, but here Gritam can also be given as an Nasyam. And then in Pittajam, so we go for Pitta Shramana Kashayas like Drakshadi, Maha Tiktagam. In later phase, we can even go for Yeshtimadu, Kshira Kashayas of Yeshtimadu, Brahmi and Shatavari can be given. Then Tagara Churnam can be administered here, Jadamamsi can be given. Sama Shatkara Churnam. And in Siddha, we have the Tamarai Churnam, which is Padmakam. Padmakam is available as Churna in Siddha, but in Ayurveda, we don't use it as a single drug, not very commonly, but in Siddha they use, and we are able to see good results.
And in Rasayanas, we can use Kushmandam because Kushmandam is Shita Viryam and Pitta Shamana. And Kushmandam will be very helpful because it is also Medyam and Samya Jananam. And in Vatis, we can use Pancharavindam, then again Kushmandam, Masanta Kusmagaram, and Ventamara, which is the white lotus, the Padmakam again, is a very effective preparation available from Siddha medicine. And we have in Siddha also, we have the same Masanta Kusmagaram in a different method of preparation. Again, it can be used. And of course, Kachoradi Churnam can be used for Talam in Pittaja Pasmaram with Kshirabala Tailam. And Bala Gudichadi, Bala Datriyadi, Bala Trifaladi, all the Pitta Shamana Tailas can be used for Shiro Pichu in Pittaja Pasmaram. Then we come to Kafaja Pasmaram, where we need some Vyavayi Vikashi Vishavat action is needed in Kafaja Apasmaram. So we go for Ashtavargam, which is Margavaran Agnam, and we have Rasonam, Rasonadi. So these are very effective in clearing the Srotas, the Sroto Rodam. And we have, of course, Danadanayanadi can also be used here. Then we have something called as Murungai Kudiniri in Siddha medicine, which is very helpful in Kafaja Pasmaram. Then Ben Kadaga, which is the white mustard, is being utilized in the treatment of Kafaja Pasmaram, which is not known actually in Ayurveda. We don't get such references. And we have a very beautiful preparation in Siddha medicine, which is for all the 80 Vadarogas, 40 Pittarogas, and 20 Vadarogas. So we have 80 Kafarogas, and all those classifications are there also in Siddha medicine. In that, Arumuga Chendurum is a very good preparation, which also is very helpful in Kafaja Pasmara. And of course, we have Supriti Sagaranas, Sutika Baranas, Brahmanda Bhairavam. So Saraswadarishtam and Ashwagandarishtam can all, because since it is Kafajam, we need to go over Sharam and Asavam and Arishtam. So Ashwagandarishtam and Saraswadarishtam are very helpful. In the later phases, we can even go for Vacha Rasayanam and Lakshuna Rasayanam in Kafaja Pasmaram. And the external application, it can be Churna Nasyam. Since it is Kafam, we don't go for Snigdam, we go for Churna Nasyam. It can be again Vacha Churnam or Trigadu Churnam, and it can be Sarshapa Taila Talam. This Tailam is being commonly used in North India. In South, we don't use Sarshapa Tailam much, but in case of Kafaja Pasmaram, definitely Sarshapa Tailam will be very helpful in the form of Talam. And of course, Bala Trifaladi and Bala Gudichiyadi, Bala Datriyadi can be used for Shiro Pichu. And there is one more drug which is very helpful, and there are some references available in Ayurveda about Tantu Pashanam, which is actually a magnesium silicate compound, which is very effective. One of the companies preparing medicine out of it, and it is not commonly available in the market. It is a very helpful drug because we are able to see very good improvements in the severity and the spacing between the tonic-clonic seizures in between, and slowly the episodes fade away, and we are able to see very good improvement in the patient's condition once the Tantu Pashan is started. And then I would also like to install Samsung Internet. I would also like to discuss on a case study patient of episodes of general tonic-clonic seizures. 3 years back, he had no episodes till now, but again the condition appeared 4 days back. During this episode, the patient had a feeling of some faces appearing before him, and he's lost consciousness. So that was very rare that to get such detailing from a patient. So the patient told us this way, and the patient regained consciousness only after half an hour. It seems he had bit his tongue during the episode. So I saw it as a Chalaguni Vriddhi of Vata and Avarana of Manas and Tamoguna. So the probable diagnosis, epilepsy, which is tonic-clonic, and the differential diagnosis can be atonic or simple partial seizure or temporal lobe epilepsy. Chikitsa Sudam is, since this is coinciding with Vadaja Pasmaram, I saw Vada, Haram, Avarnagnam and Mano Prasadanam were selected, were planned, and the medicines were again Danadanayanadi, Ashwagandha Rishtam, Tantu Pashan,
Kushma Davalehiam, Pancharavindam, and Malalakshadi Keram for Shiro Abhyangam and Thalam. So these preparations were very good, and we were able to see very good improvement in the clinical conditions of the patient. His episodes, this has been like about 4-5 months back, and the patient is currently having nil episode for the past 38 days, no episodes now. And after that, he had some episodes, he had some auras, and now he is completely out of his problems. And some clinical experiences, Nasyam with Kalyanaka Gridam can be done. Maha Kalyanaka Gridam can be given internally in the later stage. Lashunam, Kushtam, Ashwagandha, Jadavamsi, Shatavari are useful in apasmaram. Vadam, Pittam, Kafam, apasmaram can be correlated with generalized tonic-clonic seizures, temporal lobe epilepsy, and akinetic petit mal or absence seizures, respectively. So we already saw these medicines, and Rudraksham is one very good drug that can be tried in Kafaja apasmaram. That is why I tried to highlight here. Generally, in cases of tonic, clonic, and grand mal seizures, it is not possible to immediately stop modern medicines like valparin and the eptoins. We always go with our medication and then slowly taper down the modern medications and stop. And in between, we also go for EEG findings to see if some shortcomings are seen in the EEG. Otherwise, we go for tapering of the medicines and stop the modern medications at one point and continue only with our medications. We are stressing the point that frequent treatments with our medications are needed in the initial 6 months, and then the patient can even taper and withdraw our medications. So this is what we are doing for most of the patients here, and we are able to see good improvement. But I'm again telling, it is not possible to stop modern medicines immediately if the patient is already on modern medicines. And if they are directly coming to Ayurvedic drugs, sometimes it may not be possible to control just with Ayurveda. You might need modern medications. It depends on the underlying cause. If we are not removing the Nidana Parivarjanam, the cause, then the patient may have seizures in spite of effective drugs that we give. So that is very important. And Patya Patyam, again, this has a very good role in the current context. We say all this junk foods and all these spicy masala foods can bring the aura. I could see one student, especially when she is getting into max exam, she gets aura, and after coming back from the exams, she immediately get all this seizures. So for her, max is the only issue. So Nidana Parivarjanam, we asked her to select us some other group which doesn't have max into it. So she selected fashion technology, and she now is the happiest person, and she's without max, and she is able to live her life peacefully without medications and without max. So these are all the textual references. Yes, they are also very relevant in the current scenario. So let us not ignore all these small things that have been explained. Patya Patyam is very important. So that is why I thought of discussing this also here. And safety issues. We are able to see many people asking many questions with epilepsy. So that is very important. An epileptic person, if his seizures are not controlled, is better not to live alone, because many people, they come out of their town and live somewhere to work for their jobs. If their seizures are not controlled, it's better not to stay alone. So that is very important advice that you need to give to your patients. And driving, many people ask whether I can drive, because if these people get into some constraints, some pressure in between, some tension in between of the road, then they may get into direct seizures. So it may not be wise if the seizures are active. Then it is not wise to allow them to drive. So that is very important. Let us be two-wheeler or a four-wheeler, but driving can be avoided as much as possible. Kitchen safety is very important, because some people, when they get into this hot, cold water and using knife, glasswares, if they get seizures, they might injure themselves. So this is very important when a patient is having epilepsy,
then it's better to be very conscious in kitchen, very cautious in kitchen, and advise their relatives and other people of the hazards that they can face, face in the kitchen. Bathroom safety, it's always, these people are not, actually, they should not take bath in bathtubs, because there is a chance that if they get a seizure because of cold water and something, they may get into drowning. So they always, it's better to use buckets or showers directly, so that such instances can be avoided. So this is very important. Practically, these things are needed to be discussed with patients, because this is where they may go wrong and it may prove fatal in patients of epilepsy. And preventing falls, they are strictly to be told not to go to heights and work on uneven surfaces, because they may get seizures there and they may fall, and that may give a lot of other complications. And water sports, yes, that is good, but again, as I said, drowning is there. So without company, let them not get into water sports. And always use all the safety kits for each game that they are playing, and let the coach or other team members be informed that there is a chance that they get into such episodes in between. So they have to be very conscious in handling. It's better to avoid, but we cannot completely avoid all these activities, because that can get them into stress. So better the other environmental people, the people around them, can be advised of what are the safety precautions and how to overcome the acute episode of epilepsy, and these people can be allowed to live with them and play with them. So these are some of the points that I thought of discussing, and since thanks to our senior speakers, they have covered most of the points. So it's humble experiences from my 15 years of practice, so that I try to share here. Thank you very much for the very great opportunity that you have given me on this prestigious platform. Close to 500 talks is not an easy job arranging daily. So glad to be here on the 496th episode of our episode this evening. Thank you very much. Thanks, Dr. Hemamalini, my dear friend, my close friend, who had is a part of this organization, arranged me to come and speak my experiences here. Thank you very much, all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Shivkumar. Excellent presentation. Please do join every day. I would like to request you, please do join. Definitely, sir. Definitely, This is next webinar is on men care on 19th, International Men's Day. And Okay. then after on 21st, it will be on Stomach Cancer Day. Okay, great. Stomach cancer awareness. So please do join. Thank you. Thank you very much. Definitely, sir. Thank you. Thank you. Professor Pawanji, yes, thank you, sir. Thank you. I was just listening, Dr. Shivkumarji, and I found that apart from the repetition and apart from the submission given by Professor Dajis sir, he also narrated this epilepsy causes, types, and the management. And it's a pleasure to me that he has completed MD Ayurved, PhD, and then so sophisticatedly he presented in the form of PPT. So the thing which was missing in Professor Dajis' submission was made available by Dr. Ravi Shivkumarji, and this also makes me happy that before day, means on today itself we are celebrating this epilepsy day. So to make it more and more awareness, especially for those families where anyone of such type of patient is there or likely suffer from such type of seizures. So precaution is a rather better management, and as we stand for the preventive medicine, we do hope that this submission given by you will be of great help and will go now long way. Thank you, sir. Dr. Pawan Sharma ji, it is also a pleasure that you can just have one more participant today here with me in Jabalpur. क्या बात है, क्या बात. We are on जबलपुर से हरिओम.
हरिओम सर। बहुत याद कर रहे हैं आपको, एक नहीं एक जरूर जरूर जरूर, ये रवि मेरे जी, आत्मीय ये है, स्नेही है। अरे क्या बात, वाह, जय हमारे हो जय हो। हमारे जय। राम कुमार जी सारे करता धरता, नमस्कार उनको नमस्कार उनको सर। बुलाइए। देखिए सब लोग बिजी हैं। मदन जी, एक मिनट मदन। एक मिनट मदन जी मदन जी कहाँ है? आपको ये सामने, अरे आप पवन जी याद कर रहे हैं, ये देखिए जरा सब प्रकट क्या करेंगे। बात है मदन जी, तो बिल्कुल क्या बात है मदन जी, हरिओम, स्वागतम स्वागतम। पूरी टीम के साथ हम हैं, तुमने कहा आज डाइनिंग टेबल पे ही सबसे मुलाकात कराते हैं। प्लीज थैंक यू सो बहुत मच, वी अच्छा, आर गेटिंग बहुत लेट, अच्छा सो सर। you please formally invite the third guest speaker on today's webinar. Thank you sir, thank you so much. Sure. So now I would like to request Professor Nishant Shukla ji, great physician, professor and head of the department of Ayurvedic College, Anandapar. He is ex-HOD from Gulab Kumarwa Ayurvedic College, Jamnagar. So would like to welcome Dr. Nishant Shukla ji. Welcome. नमस्कार Kindly पवन unmute जी। yourself. प्रणाम जी। नमस्कार पवन जी, नमस्कार अग्निहोत्री जी, नमस्कार दधीची जी। शायद आज मेरे लिए केवल एक ही शब्द बोलने का है, वो है आभार। नहीं 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 नहीं। देखिए ये आयुर्वेद के विद्वानों पे सरस्वती की कृपा है। राम शर्मा जी ने जिस प्रकार, सॉरी शिव कुमार जी ने जिस प्रकार से पूरा जो वर्णन किया है, उसमें सभी चीजें जो है वो आ गई है, और मेरे पक्ष में कुछ जो है वो खास बोलने का रह नहीं गया है। पर फिर भी जिस काम से हम जुड़े हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो ये हमें बोलना पड़ेगा। तो आज जो है वो काफी सारी स्लाइड है, जैसे शिव कुमार जी ने भी की कि वो उन्होंने स्लाइड्स को स्किप किया। शायद आज मेरे भी उसमें यही होगा, पर फिर भी जो है वो कुछ कुछ बातें जो मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा जो है वो ज्यादा हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है, उन चीजों को मैं अपने अभिप्राय देकर के जो है वो बात कर रहा हूँ। तो अपस्मार की चिकित्सा में ये नहीं है कि इसका प्रिवेलेंस के लिए अवेयरनेस नहीं है। हाँ, आयुर्वेद का जो पोर्शन है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी है, उसको किस प्रकार से हम लोगों तक पहुंचाएं, तो ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट है। आज जिस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में अवेयरनेस क्रिएशन की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो किस प्रकार से हो सकते हैं उसको, और ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी की बात हो रही, तो वो आयुर्वेद के में भी जो है वो हमें करने की जरूरत है। और वही कुछ बातें जो है वो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो ये परिभाषा जो है वो रखी हुई है, पर फिर भी मैं जो है वो केवल उसको जो है वो स्पीड में जो है वो कर रहा हूँ। अपस्मार पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लव बिभ्यत्स चेष्टाम आवस्थिकम तम प्रवेशम आचक्षते। तो ये जो है, that is a very detailed description of the complete scenario. This is the essential for the diagnosis. When we speak about the essential of the diagnosis, there is a Smriti Bransha, this is Buddhi and Sattva Samplava. So there is a derangement in the functions of the memory, Buddhi, Samplava, associate the Bibhat, such as certain actions which are not acceptable in this society, not acceptable in the public, and that is happening. This is the characteristic sign of epileptic seizures or the tonic or clonic seizures. So these two are the portion which is to be highlighted whilst described or whilst describing the disease as well as whilst diagnosing the disease. And last one is the followed by the tama pravesha, that is the epileptic sleep or epileptic cry followed by epileptic sleep. So how this complete clinical picture arises, this simple description of Charaka will help in to establishing the essential for the diagnosis for the apasmara. Well, the Charaka described too many things. The Atatva Binivesh, Gadodvek, those are all described in
the chapter of Atattva Apasmara. So these conditions are also to be identified and to be assessed with this Smriti Vibhransha and Buddhi Vibhransha. These are the two different references from the Ashtanga Hridaya. I'm moving on to the third reference. Tama Pravesha Sarabho Doshat Drako sorry, Apasmara iti Gyeyo Gado Gora Chaturvedaha. So the Tama Pravesha is the most important final presentation of the disease. So the complete description, starting from the aura to the epileptic sleep, this is whole will help in the diagnosis of the epilepsy. I'm moving on to the next definition from the modern part, that is a central neurological system disorder, which is brain activity becomes abnormal, causing seizures or period of unusual behavior, sensation, and sometimes loss of awareness. So this is a very clear-cut definition, and this is also near to what is described in Charaka as well as Ashtanga Hridaya. So the Tama Pravesha and Smriti Vibhransha, these are the two important essentials of the diagnosis in the epilepsy. I'm moving on to the next slide. Now, when we speak about the psychic disorder, psychosomatic disorder, and the somatic disorder, Charak in Vimansthan mentions that Unmad and Apasmara are the Manosharir Vikar. When we spoke of the anxiety, stress, depression, anger, fear, psychosis, they are all typically the psychic disorder as per Ayurveda. When we specifically describe the psychosomatic disorder as per Charaka, these are the two psychosomatic disorders which are described in Charaka. And the other disorders, even the Bhayatis, are what we commonly take it as psychosomatic disorder as per the modern or the contemporary medical system. The Charak Samhita or the Ayurveda, when we say, they have described wherever the body pathology is there, they are all these somatic disorders. They may have the psychological origin or the psychological and somatic relationship, which is leading to the somatic changes or the pathological changes in the specific organs and presenting into those symptoms. So this is the psychosomatic disorder, true psychosomatic disorder as per the Ayurveda. The loss of memory is the most essential feature, with irrational behavior, uncontrolled movements. The last one, which is more of the importance, it is not only the management, but we need to protect the person from the different injuries, and there are different legal issues that needs to be addressed to protect oneself from the injury and the accidents. So this has already been described by many scholars. Shiv Shankar ji has told, but I will just summarize this one. The causes can be classified into idiopathic, unknown, or the Deva cause. The inheritance, like in Yosha Pasmar or epileptic fits, there may be the congenital malformation in the parenchyma. There may be the tumor or space occupying lesion in the brain parenchyma. When we see the text Cecil's textbook of medicine or Cecil system of medicine of 1935 edition, they have described the three types of epilepsy: minor epilepsy, major epilepsy, that what we see in the present day books also. The third type of epilepsy that has been described in the Cecil system of medicine, and that is the Jacksonian epilepsy. The typical Jacksonian epilepsy, the attack starts with the uncontrolled movements of lips or these limbs. Then there is a complete limb vibration movements. Then the whole body vibrates. There may be tonic and clonic convulsions, and then after the patient falls asleep. So this is a typical presentation. This is
observed in all form of epilepsy, but specifically when there is due to the malformation or the space occupying lesion due to tumors, they have narrated the condition as Jacksonian epilepsy. This is in the text of the old era, not of the present era. The infections are there and the head injury or the trauma. Moreover, when we see in the conditions of stroke, we are also having this as a medical condition and a complication of the stroke and or as a comorbidity of the stroke. In the stroke management, now they have the contemporary medicine has added the anti-epileptic measures as a standard of operative protocol in management of the stroke. So the injury is not the physical trauma or the injury, but the changes in the brain due to the changes in the blood supply, that is the hemorrhage, may also be considered in the trauma, and that may be the cause of the epileptic fits. This is symptoms of the Apasmar, and I would like to only highlight one symptom here. It is the manasya abhihate nunam apisara pravartate. That is the manasas. This is the maha marma, and for the treatment of this one, we need to manage and to protect the maha marma. There is a mind is distress or which is leading to the medical condition and excessive aggregation due to the intake of improper food leads to the disease. Now, this has been already been described by Shiv Shankarji, but I am taking permission from the audience that I may correlate the description of Charaka and get the privilege to correlate the description of Charaka with the present condition. So this Purva Rupas or the complete description of the disease in general is described by Charaka in these words: Damni bihi shruta dosha hradayam pidayantihi. This is the stage of prodromata. So whenever the doshas are scattered in different part of the body, they rush into the damnis and they get into the hradaya. When we talk of hradaya, at that time we are specific to hradaya means heart. There is a close relationship between the anatomical heart and the brain. So there is now we are the more contemporary science is accepting this fact, and there are few studies have already been published stating the close relationship between the hradaya heart and the brain. I have taken some of the references to justify this one. I will be speaking on this one afterwards. So this is the heart, which is the mahamarma of the body, which is going to be affected by the doshas. When these doshas rush into the heart, there is a stage of prodromata. The patients have certain feeling, the typical behavior and the typical facial expression, and just before the onset of the symptom of the onset of the tremors. The second one is the stage of the aura. Sampidyamana vathate mudo brantena chetasa. That is a branti and mudatva. The face become dull, and there is a typical outside eye. The face will be expressionless, and there will be that will be followed by the seizure attack. Pashyanti asanti rupani. 1 second. Patati prasfuratyapi. There will be a tonic conversion. The patient may fall down during this one. There may be the tongue bite. Jiva akshi savalo hasto pado chavikshipan. This is the uncontrolled movement of the epilepsy. That is the stage of ictal. And last one, the post-ictal, the patient sleeps, and after getting up, he feels like that he has got a very long shift.
dosho vege cha vigate suptavat pratibuddhate, and then after he recollects whatever the things that occurring after waking up. So the period where the attack starts and the recovery from the phase, this period is not recollected by the patient, and this is the Smriti Vibhansha. This is the important sign in the Apasmara. This is the Apasmriti. This is the Sushruta's reference. The same thing is there. I'm not going in the details of this one. Only the thing is that Vikshipan Hastapada Vijramba Bru Vilochanam Dantan Khadan Vamanafena Vivruktakshaha Patate Kshitau. So this I want to highlight that this is the way how Sushruta has defined the attack. So there will be tongue bite, there will be changes in the facial expression, there will be uncontrolled movement, there will be coming out of the watery material, jag, मुंह से आने लगता है. तो this will be observed in the cases of the apasmara. This is the general symptoms of all forms of apasmara. I have not taken the doshak variations here, as it would be a very long presentation. I'll just keep that one. Now coming on to the treatment, what we should do and how to propagate the Ayurvedic medicine and make the people aware. So the first one is to protect the Mahamarma. Yajjayate yataschaiva Mahamarma samashrayah. We need to protect the heart first. So we can use the different medicine as a heart cardioprotective. Arjuna is of course not a drug of choice in this one specifically. It would be a drug of choice for CAD. But the medications like Prabhakar Vati, they may be good for the protection of the heart. Similarly, there may be the role of Suvarna in this one. So Suvarna is also a Radhya, and this can be used to protect the Mahamarma. We need to protect the Mahamarma. How we will correct this one? By first of all producing this Sroto Sodhana or correcting these channels of the body. Tai Avruttanam Radaya Srotasa Manasanam Samprabodhanam. Radaya means Rasava Srotas and Pranava Srotas, correcting these two Srotas, correcting Indriya Srotas and correcting Manova Srotas. So by correcting all the four Srotas, not three, four Srotas, we would be channelizing the nutritional system, host mechanism, and the nutritional principle of the body, and that will help in eliminating out the morbid material, toxic material from the body, or the intermediate product of the metabolism, which is creating the clouding of the brain. The next one, followed by the Shamana Chikitsa, Sarvata Susuddhisya Samyak Avishattasya cha. So here, after proper purification of the Tikshana Sodhana, the patient needs to be subjected for the long-term management therapy with Medhya Rasayan. Now, in this one may select as per the condition of the patient, as per the availability of the drug, as per the constitution of the individual. So these are the different criteria which drug is to be selected. Classically, when we speak, this is the Medhya Rasayan, it is narrated in Charaka. It would be the drug of choice for the Shamana purpose. Now, we need to have a proper vehicle for this one. This may be the Madhu, this may be the Grata Sharkara. If there is a tumor, if there is a inflammation, the Tela would be the drug of choice. If we need to improve the brain health, tissue health, if the person is having the history of stroke and developed the epilepsy, in this case, we need to nourish the brain tissues also. We need to correct the brain parenchyma. In that condition, the Grita and Sharkara would be the ideal one to be added or to be used as a vehicle for the Shamana drug. And lastly, to produce the Rasayana effect. Now, when we speak of Rasayana,
the reference of Sharangar is more important. शारंग ने एक अलग चीज जो है वो रसायन के बारे में बताई है, और वो ये है कि केवल वार्धक्य को रोकना ये नहीं है, पर रोग और दोष को समन करना, ये उसकी जो परिभाषा है. तो the medicines which can correct the medical condition or to restore the prakriti of the tissues, that is the prakriti sthapana, they are all rasayana, or they are may be classified as gruhaniya drug. So the medicine which is able to restore the original status of the tissues, histology of the brain in this particular case, is the use of the rasayana. This may be with the use of the medya rasayana or the other rasayanas also. So in each and every case of epileptic fits, we need to use the medya rasayana as one of the drug, along with or only the medya rasayana for clinical management. This is already I have discussed when we deal with the case of a Vatic type of apasmar, then the basti is the drug of the medication of the or the treatment of the choice. When it is a pitta variety, Virechan is the drug treatment of the choice. The Shleshmika variety, Vamana, is the treatment of the choice. So this is the reference from Charaka. So these are the purification procedures followed by the use of the rasayana for the management purpose. This is from the Ashtanga, the same reference is there. Only the thing is that Vagbhat narrates with the Atha Avruttana Prabodhanam Tikshne Kuryat Apasmare Karma Bihi Vamanadi Bihi. So in each and every variety of apasmara, he narrates the Vaman is the procedure for the purification of the micro channels of Indriya, Mana and Rasa, Vahasrotasa. So the first day should be Anavruta, the proper channelization of the nutrient material and the avran is to be cleared first. This is what I was describing in the first slide of the treatment, that the Mahamarma Chikitsa, that is the Hridaya Marma Chikitsa, is of the key role in the management of apasmara. Samam kuryat apasmaro doshaihi sharir manasau yajjayate yatash chaishah mahamarma samashrayah. So in each and every cases of apasmara, we need to look into the status of the mahamarma and to correct this mahamarma. Just I have taken one reference from the AHA journal. A complex interaction exists between the nervous and cardiovascular system. A large network of cortical and subcortical brain region control cardiovascular function via sympathetic and parasympathetic activity outflow. And there is also a reverse action. So we need to control and to regulate the functions of the heart. Last one, the Rasayan Chikitsa is of the role Tasmad Rasayanena Dushchikitsam Upchare Tadartha Agni Toyat Vishamat Palayit Tada. So the Rasayan karma or the Rasayan treatment or Medya Rasayan needs to be used for a very long period of time. At this point of time, I would like to share one of the case that I met it. Actually, I have presented this case, but in a different format. The patient came to me with the symptom of severe pertussis. Sorry, pruritus, severe pruritus. There was a severe itching and there was a, the skin was totally rough and dry. The clinical diagnosis at that time was the jaundice, the toxic jaundice. And primarily, I have treated that patient for the jaundice only. But after that one, when I was taking the history, I found that the patient had the
problem of epilepsy, and this problem was due to the anti-epileptic drugs. Now, I have just taken that, I have just treated the medicine. Initially, his serum bilirubin was somewhere around 11, SGPT was somewhere around 3000. There was a marked changes in the liver parenchyma, the USG. After about a period of 3 or 4 weeks, there was a decline in the biochemical parameters and the liver echo texture. And after a period of 3 to 4 months, there was a complete remission of the symptoms. From there, I have shifted that patient to the Ayurvedic medicine. That was in the 2018. Somewhere around November 2018, patient came to me in July 2018 for the skin problem. And afterwards, I have started the medicine for epilepsy somewhere around November 2018. And from there, I have just tapered the dose. I was started tapering from 1 month treatment, and after a period of 2 years, that is by 2000, I just completely stopped this medicine. And during the period of 2018 to 2020, the patient does not have any attack of epilepsy. And after 2022 till date, the patient has no episode of epilepsy, and the patient is having normal liver function. And right now his medicine has been stopped, and there is a complete remission in all the symptoms has been observed. So there are many more cases in epilepsy also that I would share if I will have the time. But this I have just presented this case in a different format. It was the hepatitis case that I have presented, and the clinical success of that I have presented in a paper on management of hepatitis. So there is a use of need of the rasayana. So whenever we want to treat a case of apasmar or a long-standing diseases like this one, we need to correct the host defense mechanism, nutritive principle, and that may be corrected with the help of the rasayanas. Rasayanam tadgeyam yat jara vyadhinashanam. That does not only arrest the jara, but also corrects the disease. Just to establish the prakruti sthapana, the prakruti of the tissues, original histological state of the tissues, and for that one, rasayana is a drug of choice. I've just taken the 2 references. There are similar references. One is from Charaka and other one is from the Vagbata. On the right, this is from the reference of the Charaka. The first one is for the correction of the srotasas prayojya taila lasunam. Next one, the next 2 are with the rasayana payasa va shatavarim. One, second one, brahmi rasam kushtrasam vacham cha madhu sanyudam. This is for dushchikitsyoi apashmari chirakari kritastada tasmad rasayanena prayasham samupachare. These are the words of the Charaka. So the rasayana medicine is of the use for a long-term management and to prevent the epileptic fits in a high-risk individual. This is a similar reference from Ashtanga. I am not reading this one. Now, moving on to the patient education and the legal issues. This is one of the most important area. We think that this is from the modern era only, or the contemporary medicine is describing all this one, but we have got a very clear description what not to do and what is to be restricted for the case of epilepsy or apasmara. Jala agni drumas shailebhyo vishimebhyascha tam sada rakshat unmadinam chaiva sadya pranahara iti. So the patient should be restricted for performing the activities those are related with water, associated with water, working in water or swimming in water or enjoying in water or what may be the more. Agni, use of fire or use of the electricity, use of the power. Druma, shaila, the stones, height, etc. That has to be avoided strictly for the cases of apasmara. This is from the Ashtang Sangraha reference. We need to prevent injury, educate the people
about the seizure precautions. So Shiv Shankar ji has rightly said we cannot restrict the people for performing the activity. It is better to encourage the people and the associated people, those who are nearby, their family and friends. They may be educated what to do in case of a seizure. So how to prevent this one from tongue bite, from getting consciousness, regaining consciousness immediately. So this is the way we can educate the people and avoid the accident and improving the consciousness. Restrictions are there. What Ayurveda is doing, this is the holistic approach. The first one is Shrota Shodhana, I've already narrated. The Tikshana Shodhana is required in case of Unmad and Apasmar. The doshas are deeply seated, it needs to be eliminated out with the Tikshana Shodhana. The Shamana is required after the Tikshana Shodhana, and the long-term management with Rasayana and the patient education. This is the complete or holistic Ayurvedic care. Now, what are the challenges? We need to have certain parameters or the clear-cut identification to have the objective assessment parameters. Right now, we are diagnosing patient only on the basis of the subjective narration of patient or the relative. But as far as the recent developments in the modern medical system, we have got this EEG and CT brain. We need to develop such type of the things, or we may develop any other thing to just to have the objectivity of the epileptic fits. So one is diagnosing as the Vatik Apasmar, the other one will say it is a Patik Atisar. So we need to have a very clear-cut objective parameters for the establishing of the diagnosis. The confirmation of diagnosis tools are not readily available in most of the Ayurvedic hospitals. We need to send them to higher center, and unfortunately when they go to these higher centers, they rarely come back to us, and that is creating the problem. We may not have a good patient base where we can show the efficacy of the Ayurvedic drugs. The objective assessment of the Hridaya, the Manas, Indriya, Srotas, Moolasthana, it is not clearly available. We need to work on this one. At this juncture, this is important. The Tikshana Shodhana may be necessary for cleansing of Indriya and Manavasrotas. This may be difficult for a patient of epilepsy. When we speak of this one, going on for a Tikshana Virechan, 30 Vegas in a day, that may be a difficult task with the patient, but we need to do it. How to do it? We need to have the experts from the Panchakarma. Dr. Shraddha Vyas is there. She can tell more about this one. Now, what is to be done this day? Educate the people at establishing the diagnosis through the Ayurveda, propagating the importance of Ayurvedic medicine in the society. There is a need of the Rasayana therapy, improving the mental health and preventing injury, educating the people for these things. This is the need of the day. And lastly, my prayers to my mentor, my grandfather, Dr. C.P. Shukla, whose able guidance and his thoughts has made me able to speak in front of you. And if there are any queries, you are welcome. Thank you, Pawan ji. Thank you, Agnihotri ji. Thank you, Naveen ji. And all listeners who has given me the chance to speak on this issue and their present hearing. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. You have covered everything and you are really inspiring as always. Shukla ji, salute. Thank you very much, sir. Thank you very much. One of the most intelligent and one of the most intelligent person on this platform. Thank you, ji.
He's really very very नवीन जी, sharp. आप कुछ बोलना चाहेंगे एपिलेप्सी पे? नहीं, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर सीपी शुक्ला जी से मिला हुआ हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्निहोत्री सर। यस सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं तो ये पा रहा था कि पहले तुम्हारे समस्त जो गेस्ट स्पीकर विद्वान है, उन्होंने अपने स्तर से कुछ छोड़ते नहीं है। और उसके बाद हमारे प्रोफेसर शुक्ला जी ने इतनी गहराई से, इतनी डीपली, हालांकि हम लोग लंच डिनर एंजॉय कर रहे थे, पूरी टीम थी, फिर भी हम अपना आवाज सुनते रहे। बहुत ही विस्तृत, बहुत ही वाइटल जानकारी दी है। और सच यही है कि क्लिनिशियन होना एक चीज है, लेकिन थेरेटिकली हम कितने साउंड है, कितने क्लियर है, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उसको गहराई समझ सके, तभी शायद एक क्लिनिशियन अपना काम कर पाएगा। तो प्रोफेसर शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब लोगों को एनलाइटन करने के लिए। और हम समझते हैं कि इससे अच्छे हम और एपिलेप्सी डे पर एक वेबिनार नहीं आयोजित कर सकते थे, जितना आज हमें एक सफलता की जो अनुभूति हो रही है। थैंक यू। पवन जी, प्लीज अलाउ मी फॉर वन क्वेश्चन पवन जी, प्लीज। एक बात बोलूं क्या? एक बार आगे सर। हाँ बिल्कुल। ओनली पवन वन जी। क्वेश्चन सर। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर शुक्ला जी से, कैन यू लिटिल बिट थ्रो सम लाइट, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन योशा अपस्मार? Can you specify what information do you want? Just in very short, I mean, how you will see Yosha Pasma? Well, for all for clinical purposes, there is no direct differences. But when we take this one, Yosha Pasmar, this is outright a hysteric phenomena. So there you won't find any changes in the Indriyavaha Srotas, in Manovaha Srotas. But there will be the clouding of the Manovaha Srotas. There will be the avran of the Manovaha Srotas. And with that one, we may have the attack of Yosha Pasmar. Yes. So, and coming on to this one, basically what I feel is that this is the Sanskrit word for the hysteria. Yes. So when we say that there is related with this one, we need to have the word with the Ayurvedic thought. So the Yosha Pasmar is a word for the hysteria. That is a Sanskrit word only. But when we speak on this apasmara, we need to have the pathological change, that is the Srotas Vigunta, and whenever there is only the Manova Srotas Vigunya, the avran of the Manova Srotas Vigunya, that leads to the Yosha Pasma. Now, in this one, when we speak about the treatment measures, in that one, the counseling part is one of the most important part. That is the most important in the Yosha Pasma hysterical. This is also important for the hysterical pain. I am not limiting to Yosha Pasma, the clinical presentation of the hysteria, that is the tonic or clonic conversion, falling down and everything. I am just stretching that one to the disorders of the different systems, like the hysterical pain. So in this condition, we need to have a proper counseling and the use of the Medhya Rasayana. When we speak about the conditions in India, whenever what happens when the patient comes to us, they want the medicine. They are not satisfied with how we diagnose the thing. They want that this problem can be corrected only with the external measures. And so we need to go with the medicine which is having the placebo. Even if we give the placebo with a good high value, then they will have a more promising effect. If we give Brahmi, Bacopa Muneri, and good quality of that one, will not have the desired effect. So in this case, type of the cases, we need to have the counseling with the medication. Thank you, sir. Thank you very much, sir. मैं 11:15 बज रहे हैं, मैं नींद के मारे झूम रहा हूँ।
पवन जी मैं एक क्षमा उनका चाहता हूँ, निशान करनी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी क्योंकि मैं आई कैन एक रिवाइंड मिनट इट नवीन जी, एक मिनट, बात काटा मत कीजिए नवीन जी, आग्रह करता हूँ। मैं 3 बजे से भोपाल से निकल के बेंगलोर आया हूँ और कंटिन्यूअस गाड़ी में हूँ सर। थोड़ा तो यदि कोई कमेंट देना चाहे, क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में कर लेंगे। यदि और कोई क्वेश्चन वो कमेंट कुछ स्पेशल अनुभव अपने देना चाहे तो उनका स्वागत है। अदरवाइज मैं अग्निहोत्री जी से आग्रह करता हूँ, कोई भी अनुभव हो कि हाँ हमने अपस्मार के रोगी को ऐसे ठीक किया है, तो वही मैं केवल सुनना चाहता हूँ। कृपा करें सर, 11:15 बज रहे हैं, दया की भीख मांगता हूँ। इंग्लैंड का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है, तो इसीलिए मैं आपसे, यदि कोई विशेषकर जिनका अनुभव हो, हम शास्त्रीय बातें तो बहुत कर रहे हैं, अनुभव हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे कि हमारा अपस्मार में इस दवा पे अनुभव है। स्वागत है। अग्निहोत्री जी प्लीज, नाउ सेशन इज ओपन, यू आर द मॉडरेटर सर। मैं नींद में पूरा टपक गया था साहब अभी बैठा बैठा, सच बता रहा हूँ, दिल की बात जी। अग्निहोत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए ये बात सही है, हम अपने शरीर का, अपने मन का यदि अमर्यादित उपयोग करेंगे तो वो उपयोग न कहला के दुरुपयोग कहलाएगा। और इंद्रियों शरीर का, मेरा बेचारा दया की भीख मांग रहा है कि पवन शर्मा अब मैं एक्सपर्ट समझ मत पा कर। रहा हूँ, तो वो अतियोग हो जाए तो वो गलत है। अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग सारा ही गलत है। मैंने भी आज लगभग ऑन स्टैंडिंग 2 लंबे लेक्चर्स लिए हैं मैंने, 180 मिनट के, और फिर बच्चों का डिस्कशन लिया। सारे टीचर्स थे, सभी असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की 30 की थी टीम। हमारा पूरा 30-32 साल का पूरा एग्जामिनेशन हुआ है। बावजूद आंखें कड़वा रही हैं, परेशान है, एक कप चाय बना के रूम में ही पी, फिर आपको ज्वाइन किया कि भाई हम लोग एक दूसरे के संपूरक है, हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और प्रोफेसर दजीत सच जैसे लोग आज अपनी अग्निहोत्री सर, स्पीच दे रहे हैं। अग्निहोत्री सर, तो जी, ये 3 वेबिनार तो 9 बजे कर रहे हैं, आप आदेश करें तो अगली वेबिनार है हम 8 बजे से रखना शुरू करें। देखिए घड़ी इससे वही है, हम 8 से करें, 9 से करें या 7 से करें, 11:15 और 11 तो फिर कठिन समय शुरू हो जाता है, ये बात तय है। यद्यपि उत्साह की बात यह है कि जब ने आज 9 बजे से हमने शुरू की तो स्टार्टिंग में मेरे 22 और 27 लोग हो गए। तो ये जरूर बताते हैं कि जो 9 वक्त वाले पक्षधर हैं उनका सहयोग तो पूरा मिला। लेकिन अब सवाल ये कि लेटर आवर्स में जब चले जाने लगते हैं, अब हम डिनर करते हुए डाइनिंग टेबल से वहां से आए, अब हम कल रास्ते में होंगे, 9:30 बजे फ्लाइट पहुंचेगी दिल्ली, हम हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ये मतलब सामंजस्य ये है, अब जाड़े आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो दिन छोटे होंगे, रात जल्दी होंगी, लोग रजाई में जी पहुंच सर। जाएंगे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। आज हम बिल्कुल समय नहीं लेंगे। अगर महेश शर्मा जी शायद कुछ आ रहे थे सामने, उनकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होता है हाँ, विचारों का, तो ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न था। नासाई शीर्षोद्वारम, सिर का द्वार नासिका होता है, तो ये अपस्मार सिर की व्याधि है, मस्तिष्क की व्याधि है, तो नासा से कोई दवा दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं तो कौन सी दे सकते हैं? वो तो शुरू में ही नस्य की चर्चा, तो सारी चर्चाएं ही नस्य हुई थी। प्रोफेसर साहब दजीत जी ने पूरा बातें ही बताया था कि हमारी अप्रोच टू ब्रेन, इट इज द गेटवे ऑफ ब्रेन। हाँ, यस नासो शीर्षा द्वारम की बात वही है, तो उन्होंने बताया था। और बड़ा सारा नस्य जिन्होंने लिखवाया भी थे, हमने नोट किए हुए हैं। हाँ, बीच के सेशन में मैंने, हाँ, बीच के अच्छा, सेशन में मैं नहीं था। बच्चा चूर्ण का उन्होंने बताया, उसका बकरी के दूध का भी बताया, बहुत कुछ बताया। सर आप बता दिए 1 मिनट में, अगर आप सुविधाजनक हो तो। त्रिकटु का रोल है सर। नहीं प्रोफेसर, त्रिकटु नस्य जो है, जी त्रिकटु जी और जी, कटफल नस्य जो है, ये वेग के काल में जो है वो दिया जाता है। और जब ये देते हैं तो उससे लाभ भी जो है वो काफी मिलता है। वेग काल जो है वो तुरंत समाप्त होता है। नहीं, वेग तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन वेग के बाद दोबारा वेग नहीं आए, इसके लिए आदरणीय उसी के लिए से तो आग्रह रसायन करता हूँ, है। क्या बोले थे? रसायन की जब बात होती है तो रसायन में ये सभी चीजें जो है वो आ जाएंगी, उसमें नस्य भी कर सकते हैं। घृत का नस्य। हाँ, घृत का आदरणीय नस्य। दजीत जी सर क्या बोले थे, मैं आग्रह करता हूँ। बहुत सारे सर आपके चेहरे पर लाइट नहीं है। ठीक है, वो सोते समय है, अब तो छोड़ दीजिए, लाइट छोड़ दीजिए, लाइट की जरूरत नहीं है हमें, उनके वक्तव्य में ही प्रकाश है सर। वही प्रकाश कर रहा है, उनके वक्त से आ गया पहले जो है संज्ञा प्रबोधन करना, और संज्ञा प्रबोधन के पश्चात ही कोई चिकित्सा हो पाएगी।
और संज्ञा प्रबोधन में मैंने बहुत सारे लक्ष्य बताए थे, तो बच्चा भी है और साथ में बारही है, दालचीनी है और बकरे का बस मूत्र बकरे। तो सबसे जो अच्छा संज्ञा प्रबोधन मेरे जो अनुभव में आया है वो है निर्गुंडी पत्र स्वरा। उससे इतना अच्छा संज्ञा प्रबोधन होता है कि जैसे ही हम नस्य देते हैं उसका 2 गुण डालें और साथ में यदि हमारे पास रक्त नहीं हो तो वो बहुत ही उग्र होता है। तो उसका हमको निर्गुंडी जो पत्र स्वरस है उसका नस्य देना चाहिए। बाद में तो सभी लोगों ने बताया, शुक्ला जी ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है, जो बाद वाले वक्ता है उन्होंने बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी कि संक्षेप में मैं कहूंगा। तो जो स्वर्ण के योग है, स्मृति सागर रस है, ब्राह्मी रस है, अश्वत्था है, सारस्वता रस है, ब्राह्मी रस है और बहुत सारे रस होते हैं। वो योग है उनका उपयोग है, मुख्य रूप से जो उपयोग है वो वैद्य रसायनों का है। और एक भेषज के रसायन योग है उसका मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होता है हुआ है। ये अपामार्ग वगैरह में है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नशे का ही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, नमस्कार। पवन जी जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो निद्रा उनकी रुक रही है। सच्ची में सर, सुबह 9 बजे फिर निकलना है, 3 बजे उठना है और फिर कल रात को बेलगाम के लिए निकल जाना है ट्रेन से। जी बस आपका आशीर्वाद रहे। और डॉक्टर अजय शर्मा भी हैं उदयपुर से, कोई भी कुछ भी यदि अनुभव हो किसी का तो प्लीज बताया, उससे फायदा हुआ, जिससे जन जन को फायदा हो, ये मेरा प्रार्थना। अग्निहोत्री सर। पवन जी, आपके पास समय कम है, पर यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा व्यास हैं आनंदपुर कॉलेज से। तो हम लोगों ने ये श्रद्धा व्यास अभी जो है वो जुड़ी हुई है। तो वहां पर जो एक केस आया था उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो कर रही थी और हम दोनों जो है वो साथ साथ में ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो जो शोधन वगैरह की जो प्रक्रिया है वो देखती थी और रसायन वाला जो ट्रीटमेंट वाला जो पोर्शन था वो मैं देखता था। तो जो दोनों जो चीजें जो है उसमें मैंने अपना रसायन वाला तो कह दिया, शोधन वाला जो है वो आज आपके पास समय नहीं है, पर वो जो है वो जब कभी भी ऐसी बातें होंगी तो वो शेयर करेंगी आपके साथ उस केस की डिटेल्स। और उसमें जो है वो काफी जो है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को मिला था। आप लैपटॉप से जुड़े हैं निशांत शुक्ला जी? हाँ जी, हाँ जी। जय हो जय हो जय हो। मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, आप संभालिएगा। फिर मेरे को कोई टाइम की लिमिट नहीं है। जय हो जय हो। नहीं, अब जैसे आपके हाल है वैसे मेरे भी हाल तो वही है, नवे गान गा रहे पर ये हम लोग आप तो जो है वो करते रहते हैं, तो ये भी बात निकलेगी कभी जरूर। श्रद्धा जी कहाँ गई? श्रद्धा जी कहाँ है? अगली बार से पवन जी मुझे दे दिया करो। लैपटॉप से जुड़े हो आप? हाँ हमेशा ही। हाँ ले तुरंत मतलब हमारे तो 5:15 हुए भी 5:30 हुए। आपकी तो दोपहर होती है, आपकी दोपहर होती है, आप क्या करेंगे? तो अभी तो पूरा दिन निकला हुआ है। अच्छा, फिर आप कहेंगे हमारे मरीज आ गए, मैं जा रहा हूँ। नहीं गुप्ता जी आप होस्ट हैं। चलिए आज की वेबिनार का सारा सार संक्षेप आ गया है मैं समझता हूँ, और समय को उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि हम औपचारिक और अनौपचारिक कोई चर्चा को यहीं पे विराम दें। ये सभी हमारे सीनियर लोग हैं, सब आराम भी करें और अपना कल के लिए तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सभी अपने अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत प्रसिद्ध जी का शुक्ला जी का सबका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक कठिन से विषय को बहुत ही पैलेटेबली इंफॉर्मेशन के साथ में आज सजाया। और तो अगर हम परंपरागत देखें तो कोई जूता सुंघा देता तो वो एक नशे का ही पार्ट है, बेहोशी आके इसको मुर्गी दौड़ा पड़ा है। बहुत पुराने जो उसमें जूता नहीं जी, गोबर है उसमें। देखिए ये गलत बात, अब उसमें दुर्गंध चाहिए वो जिससे मिल जाए। हाँ तो उसमें
गोधूली बेला का, जिनके पैरों से पसीना ज्यादा आता है, इनके मोजों से दुर्गंध आती है, तो वो आप ट्रीटमेंट का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, ये गोधूली बेला में जो भूमि भौम्य स्नान है ना, वो बताया